Resistance against fungal pathogens. Resistance against fungal pathogens, it has been mainly achieved by manipulating the defense mechanisms of the plant. Fungi, they cause different type of diseases in plants, and it also result in the loss of crop production. तो इसमें बहुत सारी डिजीजेस हैं जो कि प्लांट्स में फंजाई प्रोड्यूस करते हैं, लाइक इन केस ऑफ वीट, टोमेटो या इवन राइस में. तो इस तरह से बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस जो है वो होता है. एंड ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैज बीन यूज्ड टू cure fungal infections in plants, and one of the example it is the crop rotation, कि हम हर सीजन में क्रॉप को रोटेट करते हैं, एक ही तरह की क्रॉप को ग्रो नहीं करवाते. तो इस तरह से ये होता है कि जो फंगल पैथोजेंस हैं उनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है सॉइल के अंदर वो इन्फ्लुएंस होती है. वो हो सकता है कि अगर उसको अपना होस्ट ऑर्गेनिज्म ना मिले तो वो सर्वाइव ना कर पाए. तो इस तरह से मुख्तलिफ सीजन में मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट्स हैं या क्रॉप्स हैं उनको ऑल्टरनेट तरीके से ग्रो करवाया जाता है. एंड दिस स्ट्रेटजी इट कैन बी कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन. इन एडिशन टू दैट, द यूज ऑफ फंजीसाइड्स इट इज आल्सो वेरी कॉमन, एंड लाइक अदर केमिकल्स it can also cause environmental pollution. So although it is used, but it is also not a desirable approach to treat fungal infections of the plants. So for this purpose, some alternate strategies have also been used. Now there are different type of enzymes that are being expressed by the plants that can be exploited to control the fungal infections. Like here I can quote the example of chitinases enzymes. So such enzymes, they are also having the antifungal activities. So cloning such enzymes or the genes into the target plants, the fungal infection can be controlled. In addition to that, there may be different type of pathogenesis related proteins that can be expressed by the plants. As I have quoted the examples of chitinases, then glucanases, it is another category that can be exploited. For example, these two genes that control the expression of chitinases or glucanases, they can be simultaneously expressed in the target crops, like in cereals, vegetables, fruits, so that the expression is there and they can show synergistic effect against fungal pathogens. ये दोनों एंजाइम मिलके फंगल इन्फेक्शंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. In addition to that, plants, they also have the ability to produce peptides that are having antifungal activities, and they are commonly called as the defensin. In addition to defensin, some other proteins, they have also been reported to produce by plants, and by using this strategy or the genes from these defensive proteins, transgenic plants have been developed, and all those plants have been shown to perform good even in the field trials. So there is also one of the example of some osmoten's protein from tobacco that can be used to cure different type of plant diseases. For example, the infection of Phytophthora infestans, that is the causal agent of potato, it can be controlled by using the osmoten gene from the tobacco plants. इसमें जो फाइटोफ्थरा की जब इन्फेक्शन हो जाए पोटैटो में, तो माजी में ये देखा गया कि इसने पूरी की पूरी क्रॉप को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया था.
तो इसने लोगों की ज़िंदगियों को बड़ा इफ़ेक्ट किया था, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारी पॉपुलेशंस ऐसी थी जो कि पोटैटो पे ज़्यादा डिपेंड करती थी, उनका स्टेपल फूड था। तो इस तरह से जो फाइटोप्थेरा की जो इन्फेक्शंस हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इन द सिमिलर मैनर दैट टोबैको ऑस्मोटेंस दे कैन आल्सो बी यूज्ड to control the infection of the rice that is caused by the Rhizoctonia solani। तो Rhizoctonia solani भी एक फंगल पैथोजन है जो कि राइस के फील्ड को जो है वो टारगेट करता है। इसके अलावा कुछ बायोकेमिकल पाथवेज जो हैं उनको भी मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, phytoalexins is the group of alkaloids that are expressed when the plants they are being attacked by the fungal pathogens and they are having the antifungal activity, and their expression it can also be regulated by using the gene manipulation techniques।